हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम +2 क्लास के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। चैप्टर है 4 डिटर्मिनेंट्स। इन दैट डिटर्मिनेंट्स दिस इज द लेक्चर नंबर 8. 7 lectures has been done. Okay, now in this exercise 4.4 today we have to go up to 4.3, everything done. Now adjoint and the inverse in the 7th lecture, definition I told and examples also. Now this exercise on this adjoint of any matrix, square matrix A and the inverse of that matrix A, we have to find in this exercise. Now use adjoint and the inverse definitions here. Now you have learned again, ठीक है? You have learned again. You have done in the chapter 7 one example for the both. Now question 1 and 2, what saying? Find adjoint of the given matrices in exercise 1 and 2. So question 1 and 2 we have to find the adjoint of the matrix. Now what is the definition of the adjoint of matrix A? I told, again I am repeating. Okay, first we have to make the cofactor matrix from this matrix, and every element cofactor we have to take and write, that will be the cofactor matrix. Okay, capital A I J we can say in general form. That matrix we have to make, and the transpose of that matrix is called the adjoint of A. So adjoint of A is a matrix of the transpose of cofactor matrix. Okay, now you will learn here. Now this as question 1, A equal to 1 2 3 4. Then first find here cofactor represented by capital A. So A11, this cofactor of 1. Okay, along this row and column cancel, remaining is 4, that is minor, and it is even, sum of I and J even, so as it is what is minor, that will be value of this 4. Okay, this is the adjoint of A11. Okay, now A12, this cofactor of second element in first row, तो then minus से multiply होगी. Okay, because sum here odd, I told this, ठीक है? cofactor में minor, along this column and row cancel along the element this A12, this is here 2, so then column row cancel, remaining element 3, then minus 3, this will be minus 3. Okay, now similarly solution we are going to take of this question A21. A21 means second row and first column. So second row and first column, this element A21, this is 3. So cofactor of this 3, this ith jth sum is here odd, so minus से multiply and along row and column cancel, and remaining is 2. This is the cofactor of this A21, this is minus 2. Okay, now A22, what is the cofactor of this element A22? This is the 4 here. So cofactor of this 4, along this row and column cancel out, then 1, and here this 2 plus 2 4 is even, so as it is 1. Okay, so these cofactor matrix, then adjoint of adjoint of
A is equal to transpose of cofactor matrix. Transpose cofactor matrix is A11 is 4, A12 is -3, A21 is -2, A22 is 1. Transpose of this. Transpose means first row write as first column, then 4 -3, and second row write as second column, -2 1, -2 1. So this is the adjoint of matrix A. Answer. So like this we can find. So question number 2 similarly we can do. Okay. Now question 2. Solution of this question 2. This question number 2. Now solution of 2. What? A11 we have to find, beta. First element 1. So this along this column and row cancel, 3 5 0 1. So solution of 3 5 0 1. Solution of 3 5 0 1 is square matrix. Then 3 into 1, 3 1 ja 3, and then minus 5 into 0 0. So 3 minus 0 means 3. Okay, beta. Is equal to 3. Now second element, here we can find A12. Second element is -1 of first row. Okay, -1 का cofactor, then minus से multiply होगी, and solution of the remaining square matrix after cancelling the column 2 and row 1. Then 2 5 -2 1. So solution of 2 5 and -2 1, directly I am doing 2 1 ja 2 and minus multiply 5 2 ja 10, -10 minus 10. So minus 10. Okay, this, then this is equal, solve it, 2 plus 10 12 minus 12. This is -12. Okay. Similarly we can find next is A13, third element of first row. Okay, third element is 2 here, then cofactor of this 2. Okay, along this column and row cancel, and this is A13. Ij sum is even, so not multiply by minus. So cancelling, and then 2 3 minus 2 0, square matrix. So solution of this, 2 into 0 0 minus 3 into -2. So minus plus 6. So plus 6, 0 plus 6. Okay, beta. Direct I have solved. ठीक है. Then 6. Similarly we have to find A21. Sum of ij odd 3 odd, so multiply by minus, and solution of after cancelling the corresponding row and column to this element 2 1. 2 1 element, 2 second row first column 2. So then along this first column and second row cancel, then -1 2 and 0 1. This is square matrix. So solution of this, -1 into 1, -1 and -0, -1 -0. Okay. Then equal -1 and minus plus 1. This. Then similarly A22, second row, second column. This is the element 3. So cofactor of this 3 along this
row and column cancel, remaining 1 2 minus 2 1, cross multiply 1 into 1 1 and minus 4, minus 4 means plus 4, so 1 1 ja 1 and plus 4, cancelling the column 2 and row 2, column 2 row 2, 1 2 minus 2 1. Solve this. So 1 into 1 1 and minus plus 4, 1 plus 4 then equal to 5. Then A 2 3, second row third column, this element 5. So what is the cofactor of 5 along this row 2 and column 3 cancel, then remaining is 1 minus 2 0. Solve this. So 1 into 0 0 and minus into minus 1 minus 2, 3 times minus, then minus 2, so 0 minus 2 and 0 minus 2, and this element is I plus j is 5 odd, so multiply by minus, then it will be minus plus 2. After that third row A 3 1, third row first column, this element, third row first column, this minus 2. So what is the cofactor of this minus 2? Along this third row cancel, along this first column cancel, then remaining minus 1 2 3 5, minus 1 2 3 5. Solution of this, minus 1 into 5, minus 5 and minus 3 2 ja 6, minus 5 and minus 6, minus 5 minus 6, and sum is 3 plus 1 even, so not multiply minus, then this minus 6 minus 5 minus 11. Okay, now A32, third row second column element, this is 0. The cofactor of this 0, A32, this. So along this third row and column second cancel, then 1 2 2 5, remaining 1 2 2 5, square matrix. Solution of this, 1 5 ja 5, minus 2 2 ja 4, 5 minus 4, 5 minus 4, and then sum of ij here 5, 3 plus 2, that's 5, multiply by minus, then this 5 minus 4 1 and then minus 1. Now next last element, third row third column, last element is 1. Cofactor of this 1 along this third row and third column cancel, 1 minus 1 2 3, remaining. Solution of this, 1 into 3 3 and minus 2, minus 2 means plus 2, so 3 plus 2. Okay, and this even, sum is even, so not multiply minus 1, so only 5. So these all taken out. So adjoint of A matrix, direct I am writing, first row write as first column, direct. First row is 3 minus 12 and 6, so write as first column 3 minus 12 and 6. Okay beta, and second row here 2 1 2 2 2 3, तो these value 1 5 2, तो second column लिख दो इसको 1 5 2. Then third row
A31, A32, A33 that are -11, -15. To write this as the third column. So -11 third column, -11, -1 and then 5. This is the answer adjoint of A in question number 2. Done. So similarly we can do next question. ठीक है बेटा? Next question is question number 3. Okay? तो adjoint easy to find cofactor matrix and the transpose of that. Transpose of cofactor matrix is called the adjoint matrix. ठीक है बेटा? Transpose of cofactor matrix is called the adjoint matrix. Okay. Now question number 3. Before 3, what saying? कि verify what verify adjoint of A into A is equal to A into adjoint A into adjoint A ओके तभी इन्वर्स निकलता है इक्वल है और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। ये थ्योरम है बेटा। ओके इसको यहाँ वेरीफाई करना है, इसी से इन्वर्स बना, इन्वर्स इसी थ्योरम से बना है। ठीक है? इफ दिस इक्वल टू दिस देन ओनली A inverse exists, otherwise not. Okay, so this theorem we have to verify here. Verify this equal to this in exercise or question 3 and 4. ठीक है बेटा? दोनों क्वेश्चन में ये वेरीफाई करना है। व्हाट इज 3? 2, 3 - 4 - 6। Question 3 is A equal 2, 3 - 4 - 6. 2, 3 - 4 - 6. ओके एंड क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है बेटा 1 - 1 2 A equal here 3/3 है 1 - 1 2 3 0 - 2 3 0 - 2 1 0 3 1 0 3। ओके बेटा बी केयरफुल। दोनों सेम है, इसमें 2/2 इसमें 3, तो 3/3 का कर दें। 2/2 यू कैन डू एज हेयर 2/2 इन दिस, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है? ओके नाउ सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 यू विल डू। आई एम डूइंग सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4। सॉल्यूशन ऑफ 4। ठीक है बेटा? सॉल्यूशन ऑफ 4 व्हाट वी हैव टू फाइंड बेटा? ये एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा पहले, फिर ये रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है बेटा? LHS इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट फाइंड सॉल्यूशन में क्या A11, वही सेम प्रोसेस A12। ठीक है बेटा? A13
all cofactor of first row, first element A11, what is it is 1. So along this row and column cancel, remaining 0, minus 2, 0, 3. The value of this cross multiply 0 into minus 3, 0, and minus of minus 2 into 0, 0. So minus 0. तो 0 minus 0 only 0. ठीक है बेटा, क्लियर? डायरेक्ट आई एम राइटिंग, ओरली सॉल्विंग. ठीक है. नाउ A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी माइनस 1. cofactor of this minus 1 along this column second and first row cancel, first row and second column cancel, then remaining 3 minus 2 1 3 square matrix, then cross multiply solution of this 3 3 is 9 and minus 2 into 1 minus plus 2, तो 3 3 is 9 plus 2. ओके बेटा, एंड बाहर माइनस. क्लियर बेटा? 9 plus 2, then it is minus 11. Okay, minus y multiply because sum of ij is odd here. 1 plus 2 3 is odd. Similarly in third element 2, column third and row first cancel, then 3 0 1 0. Then solve this. 3 into 0 0, minus 1 into 0 0, 0 minus 0 is 0. Okay बेटा, done. तो similarly we can do now A21 second row first column. तो sum is odd here, 2 plus 1 3, I plus j odd, so must minus and then cofactor. What is this? 3 के cofactor. तो along this row, along this column cancel, remaining minus 1 2 0 3. ठीक है बेटा. solution of this minus 1 into 3, minus 3 and 2 into 0. ओके बेटा, 0. तो minus 3 minus 0. ठीक है बेटा, minus 3 minus 0. ओके, 2 1 यानी दिस एलिमेंट का. ठीक है बेटा. ओके, आफ्टर दैट 0 एलिमेंट यानी A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देन दिस 0. तो कोफैक्टर ऑफ दिस 0 बेटा. तो कोफैक्टर ऑफ 0 अलोंग दिस सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो कैंसिल. ध्यान दें. तो 1 2 1 3 रिमेनिंग. तो सॉल्यूशन ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 1 3. क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 3 3 minus 2 into 1 2, 3 minus 2 बेटा, 3 minus 2 that is equal to 1. Done. Next last element of second row यानी 2 3 second row third column. तो sum is here 2 plus 3 5, then 5 is odd, so multiply by minus to the solution of remaining square matrix after cancelling the along row and column. तो 2 row second row and third column cancel, second row and third column cancel, then 1 minus 1 1 0 remaining square matrix. Solution of this 1 into 0 0 minus 1, तो 0 plus 1. ठीक है बेटा. then is equal to minus 1. Done. Now last is the third row. Third row means A31, A32, A33, all these 3 elements of the third row. Third row, first element A31 first column, then 1. So along this third row and first column cancel, remaining minus 1 2 0 minus 2. Solution minus 1 into minus 2 plus 2 and minus 2 into 0 0. तो plus 2 in plus 2. ठीक है.
minus 0, plus 2 minus 0, plus 2 minus 0, 2, 3, 1, 4, even. So not multiply by minus. Now here multiply by minus to the solution of remaining after cancelling the third row and second column. Third row and second column. Third row and second column cancel. Cofactor of this 0. ठीक है बेटा? This or this cancelled. 1, 2, 3 minus 2 remaining. Solution of this cross multiply. 1 into minus 2 and 3 2 ja 6 minus 6 minus 2 minus 6. Then minus 8 and minus out, then plus 8. Okay, after that last element 3 row third column, cancel third column, third row cancel, remaining 1 minus 1 3 0. So solution of this 1 into 0 0 minus 3 plus 3 हो जाएगा. ठीक है, 0 plus 3 done. 0 plus 3 is 3. So these all cofactors done. So adjoint of A matrix, first row write as first column. First row is 0 minus 11 0. So first column, because transpose we have to write of this cofactor matrix minus 11 0. First column. Second row, ये second row है. Second row value this is minus 3 and minus plus 3. तो 3 1 minus 1. Okay बेटा. Then third row, right third column 2 8 3. This is our adjoint A. Now A is this, adjoint A is this. Now take LHS. Okay beta, take LHS. We have to verify this adjoint of A into A is equal to A into adjoint A is equal to determinant A into I. This we have to show. So first I am taking here LHS. Okay beta. LHS is adjoint A into A. ठीक है बेटा. This is equal to adjoint A. I am writing 0 3 2 minus 11 1 8. Then 0 minus 1 3. This adjoint A into A. A is 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3. ठीक है बेटा. Clear? Now this solve product first row with first column, first element, first row with second column, second element, first row with third column, third element of the first row. Okay, you know. So 0 into 1 0, 3 3 ja 9, 2 1 ja 2. तो 9 plus 2 11. फर्स्ट एलिमेंट आ गया 11. ठीक है बेटा. अंडरस्टूड. अगेन 0 into 1 0, 3 3 ja 9, 2 1 ja 2. 9 plus 2 11.
Now with second column corresponding 0 into minus 1 0, 3 into 0 0, 2 into 0 0 plus 0, that is 0. Okay बेटा. Then third column के साथ first row with third column 0 into 2 0, 3 2 जा 6 minus 6 and 2 3 जा 6 plus 6 minus 6 plus 6 0. Clear beta? Now second row with first column, similarly second row with second column and second row with third column. Then second row will come of the product matrix. Now corresponding elements product sum. The minus 11 into 1 minus 11. ध्यान से 1 into 3 3 minus 11 plus 3 we can write minus 11 plus 3 minus 11 plus 3 and plus 8 0. ओके बेटा, क्या बन गया ये 0. 8 3 11 minus 11 plus 11 that is 0. ओके बेटा. नाउ सेकेंड कॉलम के साथ देखो minus 11 into minus 1 plus 11 1 into 0 0, 8 into 0 0. ध्यान से देखें minus 11 into 1 minus 1 11, तो then it is 11. ठीक है बेटा. देन थर्ड कॉलम के साथ minus 11 into 2 minus 11 2 जा 22 minus 22 and minus 2 and plus 24 minus 22 minus 2 minus 24 and plus 24 8 3 जा 24. then this also 0. clear beta. now third row similarly with first column, second column and third column. तो 0 into 1 0, minus 1 into 3 minus 3 and 3 into 1 plus 3 minus 3 plus 3 0. ओके. नाउ विद सेकेंड कॉलम चेक करो, ध्यान दो. थर्ड रो विद सेकेंड कॉलम बेटा 0 into minus 1 बेटा 0, minus 1 into 0 0, 3 into 0 0, 0 plus 0 plus 0 0. ओके बेटा. नाउ थर्ड कॉलम के साथ 0 into 2 0, minus 1 into minus 2 plus 2 0 plus 2 and plus 3 3 जा 9, तो plus 2 plus 9 plus 11 0 plus 11. सो दिस इज योर आउटपुट ऑफ LHS. ठीक है. इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, ध्यान देंगे क्या कह सकते हैं, ये मैट्रिक्स है. ठीक है. 11 इसमें से कॉमन ले लिया, हर एक एलिमेंट में से मैट्रिक्स है. ठीक है बेटा. ये डिटर्मिनेंट नहीं है तो 11 बाहर आ जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा यानी के अंदर. तो 1 0 0 0 1 0 0 0 11. दिस बेटा. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू I 11 इंटू I. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया. ओहो 11 कॉमन 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 11 कॉमन. ठीक है बेटा. सो दिस हमारा बन गया, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I. ओके. LHS हमने लिया और लास्ट में हमने ये शो कर दिया. ठीक है बेटा. ओके. अब RHS लेंगे वो भी यही शो हो जाएगा. ठीक है. इसका मतलब दोनों इक्वल हो गई. ठीक है. LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू दैट. क्लियर. नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, A इंटू एडजॉइंट A. यहाँ इसको यहीं छोड़ देंगे रिलेशन को. ये हमने प्रूव कर दिया LHS जो है लास्ट के साथ, बट डिटर्मिनेंट A हमें शो करना है.
डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा बेटा? डिटर्मिनेंट ए देखो, डिटर्मिनेंट ए हमें यहाँ सॉल्व कर लेना चाहिए. व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए? दैट इज 1 इंटू कोफैक्टर. ध्यान दो, दिस कैंसिल, 0 इंटू 3 0 माइनस 0 इंटू 0, 1 इंटू कोफैक्टर इज 0. ठीक है बेटा. प्लस -1 इंटू, अब इसको -1 लिख लो. ठीक है बेटा, -1. ओके, राइट हेयर -1 बिकॉज प्लस इंटू -1 एलिमेंट. ठीक है बेटा, एंड इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस -1. तो -1 के अलोंग कॉलम एंड रो कैंसिल. 3 - 2 1 3, 3 3 जा 9 बेटा, 9 एंड माइनस प्लस 2 यानी 11. ठीक है बेटा. ओके, और नेक्स्ट प्लस थर्ड एलिमेंट इज 2. ठीक है बेटा, 2 एंड इट इज A1 3. तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होनी. ठीक है, तो 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 अलोंग दिस कॉलम एंड रो कैंसिल. 3 0 1 0, तो 3 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 0 0, तो इंटू 0. तो क्या बन गया बेटा ये? 1 इंटू 0 0 माइनस 11 इंटू 1 माइनस 11 एंड प्लस 2. अंडरस्टैंड, को फैक्टर की मल्टीप्लाई नहीं हुई, यहाँ पर -11 आएगा. ठीक है, क्योंकि वो ij नेगेटिव, बिकॉज दिस -1 एलिमेंट है एंड को फैक्टर विल कम -11. ओके, दिस विल बी 2 इंटू 0 0, then it will be 11. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A is 11. So 11 written here, determinant A into this is I. 1 0 0 0 1 1 0 0 1. It is identity matrix. Now what we have to do? Similarly what you can do? ये जो आपका है ये वाइस वर्सा करना, दिस इंटू दिस. यानी सिमिलरली यू कैन से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल. ठीक है, ये RHS. ठीक है, ए कितना है बेटा? ये है 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3 A इंटू एडजॉइंट ए क्या है आपका? ये है बेटा 0 3 2 -11 1 8 0 - 1 3. ये इसको सॉल्व करें. अब प्रोडक्ट कैसे हो गया? A इंटू एडजॉइंट ए. तो अब ये हो गया फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम सेम. तो करो बेटा, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 प्लस 11, 2 इंटू 0 0, तो प्लस 11 प्लस 0 देन 11 डायरेक्ट. ठीक है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट. नाउ विद सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट सम 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -2 -2, 3 -1 -2, 3 3 0. नेक्स्ट थर्ड कॉलम के साथ चेक करो. 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 -8, 2 इंटू 3 6, तो 2 + 6 -8 देन 0. क्लियर बेटा? नेक्स्ट सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो विद थर्ड कॉलम, देन सेकेंड रो विल कम. नाउ 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0,
-2 into 0 0, तो देन दिस इज 0. नाउ सेकेंड कॉलम के साथ चेक करो ध्यान से. सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम 3 into 3 9, 0 into 1 0 and -2 into -1 plus 2, 9 plus 2 11. ठीक है बेटा. थर्ड एलिमेंट चेक करो विथ थर्ड कॉलम 3 2 जा 6, 6 0 into 8 plus 0, 6 plus 0 and -2 into 3 minus 6, 6 plus 0 minus 6, that is 0. Okay beta. Now third row with first column, second column, third column. तो 1 into 0 बेटा 0, 0 into 11 minus 0, 3 into 0 0, then it is 0. नेक्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ 1 into 3 3, 0 into 1 0, 3 into -1 -3, 3 minus 3 0. नाउ थर्ड कॉलम के साथ 1 into 2 2, 8 into 0 0, 3 3 जा 9, तो 9 plus 2 plus 0, that is 11. Done. So same this also 11 out, and then 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is your is equal to 11 into I. This is I. Okay. Then this implies what? Determinant A into I. So result this 2 also. RHS से भी रिजल्ट यही बन गया, LH से भी रिजल्ट यही बना. Then it means all three are equal. Okay. Hence proved. ठीक है. तो like this we can do now last question number 5. तो हियर वेरिफिकेशन मीन्स एडजॉइंट भी फाइंड करना. ठीक है बेटा. एंड ये डिटर्मिनेंट आ गया आपका, वेरीफाई हो गया ये. तो ए इनवर्स भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं. ओके. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी कैन डू लास्ट क्वेश्चन टुडे. 5 is find the inverse of each of the matrices. Find the inverse. तो क्वेश्चन 5 फाइंड इनवर्स. फाइंड द इनवर्स. क्वेश्चन 5 में 2 - 2 4 3. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स. एडजॉइंट adjoint of A, that it is equal to A से. ठीक है बेटा. इसको A कह दिया. तो इसका हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स लेनी है और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख देना. डायरेक्ट दोनों वर्क कर रहे हैं. ठीक है बेटा. हमने अभी किए हैं. तो 2 का कोफैक्टर बेटा along this cancel only 3 कोफैक्टर. ठीक है बेटा. दिस इज 3 और सेकेंड एलिमेंट का हम यहाँ लिखेंगे कॉलम में. ठीक है बेटा. -2 का कोफैक्टर. तो दिस along this cancel 4 and but it is 1 2 so -4. So this is -4. ठीक है बेटा. Now 4 this is 2 1 here also माइनस से मल्टीप्लाई होगी. तो along this column and row cancel it is -2 and multiply by minus, then it will be 2. ठीक है बेटा.
and then this second row, then writing second column. तो then 3 का co-factor, this cancel बेटा, this cancel 2, ये बेटा एडजेंट बन गया, ठीक है, डन, एडजेंट ए आ गया। अब हमें क्या निकालना बेटा, डिटर्मिनेंट ए भी हम निकालने, डिटर्मिनेंट ए इसकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले में इनवर्स के, ठीक है बेटा। डिटर्मिनेंट ए मीन्स फर्स्ट एलिमेंट एंड कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, कोफैक्टर इज 3, ठीक है बेटा, प्लस एलिमेंट -2, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, कोफैक्टर इज -4, ठीक है। अलोंग फर्स्ट रो मैंने सॉल्व किया, 2 3 जा 6 एंड माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 + 6 14, ठीक है बेटा। ये वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ए की। ओके, नाउ फार्मूला वी नाउ विच फार्मूला, इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A divided by determinant of A. Okay, then adjoint A this divided by 14, so 1/14 into this adjoint of A, 3 2 -4 2, ठीक है बेटा। तो इसमें 14 से डिवाइड हो गया हर एलिमेंट में अंदर, तो 3/14 2/14, 2 7 जा 14, 1/7, then -4 divided by 14, तो 2 2 जा 4, 2 -2/7, and 2 divided by 14, 1/7. This is the answer. ओके बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बन गया, 3/14, 1/7 -2/7, 1/7 आंसर। ये ए इनवर्स हो गया, ठीक है बेटा। तो लाइक दिस वी कैन डू। ओके, टेक इंटरेस्ट, watch, like, share and subscribe the channel and send the videos to the maximum contact। अपने पास जितने भी कॉन्टैक्ट है, जितने फ्रेंड है, सबको भेजें और उन्हें गाइड करें, वो देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू। ओके।